I forgot to think of questions in the meanwhile. I was so happy to take a break. Okay, one of the things that was running in my head, all of this sounds so idealistic. Where are the real problems? Where are the real problems? So I want now to hit the nail on the head. A lot of my viewers must be thinking, ये हर हफ्ते आता है, सारे लोग बहुत मस्त बातें करते हैं on camera. Sometimes so even while asking you questions, I keep on thinking, inner dialogue कभी कभी चलता है. अबे, you also don't know how to solve it. How are you acting as if you know? But I don't, and I am comfortable with it. So now my question to you, Purva, this journey takes a lot from a person in terms of self-belief, in terms of loss of self-confidence when you leave what can be called the proper way of functioning. सारी दुनिया कर रही है तो ठीक ही होगा ऐसा लगता है, फिर हम क्यों ये सब पागलपन कर रहे हैं. Then there are bad days. मतलब आपने अपना पूरा प्रयास डाल दिया, you put in your entire effort, work, dedication, and you find something is not working for one student, or one parent is not happy, or maybe on that particular day you have a lot of bad luck, and Rajita has said something that you think, यार ये तो basic था, ये तो I was communicating this, नहीं समझी. ऐसे भी होते हैं. Then among the best of partners that seems to happen. On those days when you take it, already it is a path of vulnerability, not in terms of negativity, but it is chosen, so that there is always that strength that moves with you. तुम्हारा choice है, तो तुम चल रहे हो. Like when she was talking, one of the things that came to me, मेरे more than one friend has actually landed up saying कि यार जिसका पेट भरा हुआ है ना, ये सब नखरे वो कर सकता है. मतलब that has been told to me many times कि ये सब जो तू बोलता है ना, तू जब चौल में रह रहा होता ना तो तू ये नहीं कर पाता. और मेरा इनर फील इससे एग्री नहीं करता है. अब बोल तो नहीं सकते, अब है तो मैं क्या रास्ते पे जाके अपने सब फर्नीचर फेंक दूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता. अब जहाँ पैदा हुआ वहीं पैदा हुआ, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है. बट मुझे मालूम है, मैंने देखे हैं जब मुझे पैसे खर्चने हैं और वो पगार खत्म हो गई है, डैड से मांगने का मन नहीं है, तो वड़ा पाव के पैसे नहीं है, ऐसे भी दिन देखे हैं ना. तो मुझे आई नो दैट फीलिंग, आई हैव बीन इन दैट स्पेस. So that gives me confidence that I understand what is hunger, little bit, maybe not as much as a hungry person would. So my question to you, Purva, comes from, on that bad day in the life that you've chosen to lead, what do you tell yourself? And you got to be honest. And Rajita, आप earphones थोड़ा बंद कर दो. She wants to say something. नहीं ऐसे तो बिल्कुल नहीं है. एंड आई वुड अग्री, आई वुड एडमिट दैट ऐसे तो कितने बार होता है, यू नो. इट इज ऑलवेज 2 steps ahead and 1 step backward, with a lot of self doubt, a lot of contemplation कि हम लोग क्या कर रहे हैं. Not just that, people around also kind of ये कीड़ा छोड़ देते हैं मन में, that you are playing with future of the children. So I always have this shaky ground. I would say that is something which is more worrisome. ये मेरा और रजिता का conflict तो इतना नहीं ज्यादा होता है. The only thing that I do in such cases is talk to Rajita, Pinky, you know, the facilitators that we have. Think about why we started this. अगर हम लोगों ने ये नहीं शुरू किया होता और अगर हमारे बच्चे ऐसे ही स्कूल में जाते थे तो सच में क्या बहुत पिक्चर डिफरेंट होता था क्या. So going back to the first question, that why we initiated this, it's something that brings peace. और अगर कुछ हम लोगों से करना कम पड़ रहा है तो फिर उस पे एक्शन लेना चाहिए, वो भी है. जैसे कि अभी का मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हमारे सेंटर में तो एग्जाम भी नहीं होते, एनुअल एग्जाम, स्टैंडर्ड्स नहीं है, सब बच्चे एक साथ रहते हैं. तो अभी सडनली जब बच्चा 12-13 साल का हो जाता है, देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी अबाउट 10th स्टैंडर्ड.
फिर लगता है कि अरे अभी ट्रायल नहीं देगा, 8th स्टैंडर्ड की एग्जाम नहीं देगा तो एग्जाम कैसे, वो भी कैसे समझेगा, 10th के लिए प्रिपेयर कैसे कर पाएगा. So some parents they withdrew the kids from the center कि हम एग्जाम नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, तो they did not find secure with us. तो फिर तो यही सवाल है कि हम लोग क्या कर रहे हैं. अगर किसी बच्चे को एग्जाम देनी है और हम लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे इन द सेंस हमें ये लगता है कि नहीं करना है इसके लिए नहीं, बट द होल क्वेश्चन इज टू द सिस्टम ओनली ना, व्हाई टू हैव एग्जाम्स. पर अगर ऐसे है कि सच्ची में किसी को प्रिपेयर करना है, कुछ आगे जाके उसका करियर उसी एग्जाम पे डिपेंडेंट है, तो एज अ फैसिलिटेटर एटलीस्ट वी नीड टू फाइंड आउट द ऑप्शंस कि हम हमारे तरफ से क्या करते हैं वो सोचना है. सो एक तो आस्किंग माई सेल्फ द सेम क्वेश्चन दैट व्हाई डिड वी स्टार्ट इन द फर्स्ट स्टेप. अगर हम लोग स्कूल में होते तो कुछ बहुत ही अलग पिक्चर होता क्या. एंड थर्ड, डिस्कसिंग माई एंग्जाइटीज with my colleagues is what helps me a lot. Okay, thank you for that absolutely honest answer that you gave, and that was a wonderful example of not having exams. I already like your school. I just wish I was not old enough to come to your school. Okay, I want to give a little personal example here, so that will set a context. The school my kid goes to, she's a teen now, reached her 9th standard. I chose that school because when I had gone to take admission, तो होली का दिन था, कुछ ऐसा ही होली के दिन थे या था पर्टिकुलरली, तो बच्चे एक दूसरे को फुगे मार रहे थे, कलर मारा था, बहुत ज्यादा वो ये वाला नहीं था, कलर अच्छा वाला नहीं था, but that is not really the question. I realize अरे ये तो मिडिल क्लास स्कूल है, बहुत बढ़िया है. मुझे ऐसा ही स्कूल चाहिए जहाँ पे ना बोझ नहीं चाहिए. मतलब अच्छे स्कूल तो बहुत सारे हैं थाना में, और कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तो कुछ किया ही जा सकता है. बट आई वॉज वेरी क्लियर कि यार मेरे को ना एकेडमिक्स पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है. इट इज नेसेसरी इविल जैसा है कि करना है इसलिए कर रहे हैं. तो उसको मैंने उस स्कूल में डाला भी, और कई बार ऐसी चीजें हुई कि उस स्कूल में भी मैंने ऐसी चीजें देखी जो मुझे काफी, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन था फॉर एग्जांपल, दैट गर्ल हु हैड कम ड्रेस्ड एज अ पर्ल एंड शी वाज लुकिंग लाइक एन एब्सोल्यूट पर्ल, बट शी वाज अफ्रेड. तो वो स्टेज पे आई तो स्टेज फ्राइट के कारण पूरी जैम हो गई एकदम. एंड the mother of the child was coaxing from under the stage, and this was like within the class wala competition, not like a school competition also. And like वो शाहरुख खान पिक्चर में करता है, हमारी माँ ऐसे होती है वैसी होती है, blah blah, तो ऐसे ये कर रही है. And I felt very agitated about it because the kid had completely, मतलब it was the worst thing to do to anyone, including an enemy. ये तो मतलब डिप्रेशन का शॉर्टकट है यार. मतलब पर्ल बन के आई है, इतनी सुंदर लग रही, इतने सुंदर सारे बच्चे लग रहे थे ना कि मतलब मजा आ रहा था देख के कि चलो फैंसी ड्रेस कंपटीशन है. तो आई वेंट एंड टोल्ड द टीचर कि मैम प्लीज, एंड दिस वाज हार्डली प्राइमरी सेक्शन की बात है, ये बहुत साल हो गए. तो आई टोल्ड हर मैम प्लीज टेल दैट चाइल्ड्स मदर टू आस्क हर टू लीव द स्टेज, इट्स ओके, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. शी सेड नो, आई कांट से दैट, दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद मी. But I agree with you. You can take the mic and say this as a co-parent. So I actually took the mic and announced that I couldn't obviously point out to that kid and the mother. But I said all the kids, and look, my kid has also come dressed as something, and she's going to take the stage, and it's all right. Even if they fail, it's not really a big deal. And my kid came on stage and she forgot her line and she kept looking at me and I said, okay, come down. Okay, yeah. Chill. She came and she said, maza aaya, whatever, and she forgot about it. And it was done. But this episode stayed in my mind कि ये स्कूल जिसको मैं वैसे ही ठीक ठाक टाइप स्कूल समझ रहा था, जहाँ पे स्कूल is cool, can have fun and you can make friends and learn life skills of sorts.
relationship building and those kind of things that are not in your textbook. In textbook, ठीक है. So that happens in real life and outside. And exams bhi hote hain. She says, off late she told me once, she said that you act very chilled, huh? But when exams come, you are also quite a parent and all. So I said, अबे घर में और लोग भी है. If you don't study, तो मुझे भी डांट पड़ेगी, तुझे भी पड़ेगी. You better get your result at least reasonably okay कि इतना बुरा ना आ जाए कि सब लोग को गाली पड़े. फिर हम लोग दोनों का freedom चला जाएगा. So this way of bringing you up, I'm trying to let you loose a little and chill. And the only condition, you may laugh at this, is that if she comes first in school, she'll get trashed at home. So she's like, what? I said, yeah, first is not allowed. First जो आते हैं बाद में कुछ करते नहीं है, मतलब एकेडमिक किताबी कीड़े बन जाते हैं. मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई बच्चा. So she was laughing, and over a period, she's learned to appreciate when she sees her friends' parents, talk about results and this and that. I tell her, जिस दिन she seems very stressed, कि छुट्टी करनी है, मैं नोट लिख के दूं क्या? Let's just, ठीक है, क्या है उसमें? मतलब I understand the system is necessary because I didn't, obviously your schools, this is the second week in a row when I'm finding a school like this. Not that I would have succeeded or I would have the guts to do it, perhaps, I don't know. I've always been a little bit of a unsure, very fearful. Like you said, कि kid का future है, तुमको मालूम नहीं कि what is the right decision. But उसके अंदर क्या कर सकते हैं? Let's try and ease that pressure and अपना तो मत डालो ना उसके सर पे ये कर रहे क्या. Sometimes I actually have to pull her apart and say, to hell with your stupid homework. Like once I told her कि I said, मैं कर देता हूँ यार थोड़ा टाइम. तो छोड़ दे. She said, no, then teacher will know handwriting is changed and all that. I said, don't bother too much about it. So this is my way of functioning. I just want to put it on record because you've gone alternate, but this is like alternate within the mainstream as much as possible. Not that my folks also know that I'm so easygoing or something. It has to be done very subterfuge है basically. War है ना भाई, आपने ही बोला. तो थोड़ा guerrilla tactics में आता है. And she is थोड़ा, मतलब my wife was a teacher, तो इसमें भी थोड़े वो पढ़ाई के गुण ज्यादा है. मुझे उसको खींचना पड़ता है कि छोड़ दे भाई, बाहर दुनिया में जो सीख रही है वो ज्यादा अच्छा है. तो having said that, now I come back to that question that she did not really answer in that sense, because she brought it to a point which gave me like dhak ke 10th ka exam, my God, which I don't want to worry about. I am not really worried about, but I have told my kid very clearly, look, this is what you could probably. She asked me, what should I be doing? I said, look, I can't answer for you, but looking at your aptitude and attitude, I think you will end up doing this, is what my feeling is. You will end up doing something within the arts. तुम ऐसा कुछ करोगी because you like, you're gregarious and extroverted and like making friends. तो शायद उसी में जाओगी arts में. Arts में these are colleges, ये college है, इधर percentage बहुत लगती है. So there is sacrifice. तुमको बहुत घिसना पड़ेगा. इसमें घुस गई तो वो life बना देगा ये college में. और नहीं तो भी तेरे डैड का इतना तो है कि कोई अच्छे कॉलेज में तुझे करवा देगा कुछ ना कुछ. You don't worry about all of that. हम तभी का तभी टेंशन लेंगे कि क्या करना है, ये क्या नहीं करना है. But you work with the understanding that this is probably that you might do, जैसा मुझे लग रहा है, if you feel like. तो अभी she confidently and she is going and telling some other 10th का student, my dad has to said कि I am going to go there. Like, hello. She said, but he said that you have to study a lot for that. I said, yeah, because वो result oriented चीज है, उसकी entry थोड़ा लफड़े वाली है. But this is how it works. अभी ये दुनिया ऐसे चलने वाली है. But उधर नहीं मिला तो end of the world नहीं है. दूसरा है फिर, then I will tell you what else to do along with it. So like that particular college has a lot of extracurricular activities. Lot of them and very beautiful stuff. In terms of learning the arts or doing something for society, social enterprise, lot of those kind of projects. So that is a good thing. I told her, I said, but getting there is a problem, but we'll see what can be done. And also वहाँ के लोग अच्छे हैं तो फिर बड़ी अंग्रेज हो जाएगी, तो सारे लोग अंग्रेजी बोल के. So that is a different world for you to experience in terms of literature. होता है तो ये होता है, ये मतलब bookish learning है कुछ part, but वो भी बहुत ही what is the term I am looking for? It's done with a lot of love. It's not just
a burden put on you. So that atmosphere is useful. That's what I'm looking at. So my question to you, Rajita, now comes from this fact that I gave you a bit of examples about how I deal with things, and I'm as mainstream as they get uh, within what they look at. And when they look at me, they think look का ही है, तो क्या करता है? But he's a very ऐसा good-hearted person और सबको ये करता है वो करता है. So they have that kind look towards me. But in terms of professional success or this or that, they don't really know where I belong. And I generally don't talk about my career or any such thing. They don't know that I have done the rounds of corporate circles and all this stuff. So coming to you on that, and now that you have an alternative experience of teaching, and also you've been in the rat race, your kids have been in the normal schools, you had that first year of I wouldn't be able to answer. Is there some advice that you can give? And I don't want advice as advice, but more experiential learnings that people can do with their kids. If there are other friends of mine who have kids who are watching this episode, something that you knew even before you started this alternative thing. Things, some of them like I discussed, but these are my ways, and a lot of parents don't seem to like the way that I deal with it. They say, "अरे ये तो बच्चे तो बिगड़ जाएंगे ऐसे," and all that. So I don't think that's the scene. So is there anything that you would want to say which is more mainstream in comparison to what you're already doing? I think बच्चे है ना, what you are is what they get from you. Like what you do to them or what you tell them to do is actually secondary. If you know ये चीज शायद बच्चों के साइकी से बहुत बचपन से शुरू हो जाता है. They all पूरा मैप कर लेते हैं आपको. So you as a parent and what you do, how you behave with everybody else, and what is it that what your aspirations are, what you do for your work, what is generally your attitude, आपका mood कैसा रहता है, सब चीजों को मिला के what you are as a person or your persona, वो बच्चे बहुत जल्दी से they scan you, and what you are is more important than what you do with them or do to them. So मतलब अगर आपको लगता है कि my child has to become a good reader, and if you are not, then that ambition is completely useless. If you are a person who spends about an hour reading every day before going to bed, then there are highly likely chance that your child will become a good reader. If you think that my child has to become very good in sports and you yourself are potato couch, तो फिर तो नहीं होगा. तो और आप उसको पुश कर रहे हो, नहीं तू बैडमिंटन खेल, तू फुटबॉल पे जा, ये कर वो कर, ये ऐसे नहीं होगा. सो इफ यू हैव सर्टेन एस्पिरेशंस फॉर योर चाइल्ड, वेदर और नॉट यू हैव rolled up your sleeves and gotten into it is what matters first. तो वो एक चीज है. आप बच्चों को ये अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा चेस का बड़ा क्रेज है और ये बहुत है कि मेरा बच्चा बिकॉज वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बढ़ाता है, ऐसा करता है वैसा करता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है. यू कैन हैव इंटरेस्टिंग टॉक्स विथ योर चाइल्ड. व्हाट अगर आपकी जो समस्या है, you have a colleague who is like pain in the neck, उसको कैसे डील करना है आपको पता नहीं है, आप अपने बच्चे के साथ शेयर कीजिए, बात कीजिए, कुछ एलियस लगा के बात कीजिए कि अरे सो एंड सो अंकल मुझे बड़े परेशान कर रहे हैं, मुझे पता नहीं how I can deal with them. So you discuss your real life problems with them, and somehow even though they will not be able to completely encapsulate what is going on in your life, they will know how life is supposed to be led and what your approach is. आप अगर बोलोगे कि आपको है कि अच्छा आप मेरा गुणी हो, बहुत ही काइंड बच्चा हो, and your reaction to your colleague is very rough and aggressive, so they are going to judge you for that. So एक तो first of all कोई भी expectation ये शायद गलत होगा बोलना कि कोई expectation ना रखें, लेकिन जितना हो सके कम रखें. जितना अगर आपको लगता है 10 चीजें मेरा बच्चा करे, तो मेक श्योर कि उसको you revise it
एंड हर साल आप ऐसे करो कि इतना ना रखें एक्सपेक्टेशन। मुझे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं लगती कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ पर्टिकुलरली ऐसा कुछ मुझे बोल के किया हो कि अच्छा तू ये कर ये कर ये कर, उसके वजह से मैंने किया हो। आई जस्ट नो दैट ये वो ऐसे थे, उनका एटीट्यूड ये चीजों में ऐसे था और वैसे वो लोग चीजें करते थे, तो मैं वैसे ही चीजें अभी करती हूँ। My parenting are many of the things that I do today are because my parents used to do that, or I did not like it, and I am doing exactly opposite of that. So Yeah. they did not think कि भाई मुझे तुम्हारे साथ उसको I want to raise you like this, so this is my strategy. ऐसा नहीं है. So but many of the things that I am today are also because मैंने उनको देखा है इस तरह से। मेरे जो मिडिल क्लास वाला जो एक माइंडसेट होता है, एक ह्यूमिलिटी होता है, हर चीज को सहने का जो टॉलरेंस वाला जो, ये सारी चीजें वहीं से आई है। उन्होंने मुझे बोला नहीं कि भाई यू बिकम मोर हम्बल और यू बिकम मोर टॉलरेंट, या ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं। सो what you are is what will matter the most. अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को ऐसे करना है तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विथ योरसेल्फ, स्पेंड मोर टाइम, ये सब तो नॉर्मल है ही, स्पेंड मोर टाइम और वो सब तो चीजें तो है ही, बट एज मच एज truthfully, and if you can hold your child as your dearest friend, तो then तो कुछ भी नहीं है, even if you are not a good parent, that is okay. If you are thinking if you are thinking that I have to take care of them, they are my property and I have authority over them, then सारे चीज निकल गई। If you think that ये तो मेरा फ्रेंड है और मेरे सारे प्रॉब्लम्स है उसके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे ऑफ। एंड जब बच्चा छोटा होता है तो देन यू कैन हैव अच्छा वेरी प्रोटेक्टिव वेरी केयरिंग, बट जैसे ही बच्चा आई थिंक अबाउट 7+ से हो जाता है तो यू कैन हैव अ वेरी फ्रेंडली कन्वर्सेशन, friendly, you can have some dilemma in your own mind, अरे मुझे तो जाना नहीं है but my friends have invited and I don't really like them, but क्या करूँ, and they will give you a good answer, they will give you a good advice, and they will say something कि आपको 2 मिनट सोच के सोचना पड़ेगा। So yeah, I don't know if that answers. That's very good advice. The only good thing is I follow most of it. एक चीज मैं नहीं करता हूँ, मैं alibi नहीं, मैं तो नाम बता के कर देता हूँ, तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो फिर she knows everything that she knows, and then sometimes she reprimands me कि अरे पापा आप तो ये ऐसा, but why are you behaving like this, or something like that she will say. Most times I listen to her, but sometimes I say I am your father, I know. So that also tends to happen. But overall, there is a bit of like what she says, chilled behavior. जितना हो सके one is trying to ease. इसमें if I want to this standard of being the thing that you want from your kid is far too high. कभी उसको नीचे भी कोई लाओ, सारे टीचर यही बोल रहे हैं आजकल तो sometimes that makes me feel कि यार थोड़ा तो मतलब मैं नहीं करता हूँ, तू करना, अच्छी बात है करने के लिए। While I'm saying this in jest, is there anything like that that can actually happen, Purva, at all? कुछ भी तो हो सकता है ना, तुमने इतनी बार समझाया, कुछ तो समझ जाएंगे कि मैं नहीं समझ पाया, बट ठीक है तुम कर लो। तो I'll give you an example. ये इंस्टाग्राम पे शाहरुख खान का रील था, तो कहीं पे ही सेट कि स्मोकिंग अच्छी बात नहीं है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पाता। तो ऐसे बहुत सारे मतलब he said that about his that he didn't want his kids to pick it up whatever. वैसे हम सारे हैं, माने कोई लोग किसी चीज में फंस जाते हैं। There will be parents who will have some other problems that they are unable to discuss. It's not that they shouldn't. I completely agree with what you've said, because we had attended a very painful parenting class, me and my wife, when she was pregnant, and I used to hate it. वो lunch नहीं देते थे 3 बजे तक, मैं तो मतलब गाली देता टीचर बिठा के क्या करते थे। बट एक बात मुझे अच्छी लगी थी कि you can tell anything to your kid वाली चीज उन्होंने बोली थी। तो आते आते मैंने बहुत ही कॉन्शियसली ये डेवलप करने की कोशिश की है। कभी कभी नहीं हो पाता, बट कभी कभी मोस्टली आई ट्राई एंड सी कि अब तो दुनिया में
आ रही, like she is now getting into her teens, so she is going to see the world. Better that she gets all kinds of information as much as is possible that I can give it to her, and the world is moving at a faster pace than we can handle. Like she was a good kid. I stopped her from joining Insta before she was 13. Gmail पे मेरा मेल यूज कर रही थी स्कूल के वजह से, जो यूज करना पड़ रहा था, एंड शी वाज गुड अबाउट इट. तो आई टोल्ड हर कि देख वो बोल रहे हैं तो उनको मालूम ही होगा कि ठीक नहीं है, तो तू और मैं क्यों डिसाइड करें, जब किसी और ने सोच लिया है तो हम अपना दिमाग क्यों वेस्ट करें उसी चीज के ऊपर. तो वी विल ट्राई नॉट टू डू दिस. मैं तुझे बता सकता हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो तेरे लायक की नहीं है जब मैं देखता हूँ, बट कुछ कुछ अच्छा होगा जो मुझे अच्छा लगता है. ये बच्चे ने बहुत अच्छा डांस किया है, ये बहुत अच्छा ये है, तो मैं तेरे साथ शेयर करूंगा, तू मेरे साथ मेरे मोबाइल पे तब तक देख सकती है. which created a problem for her friends when their mothers found out कि मैंने ऐसा रूल रखा है और हमारे घर में ये लागू होता है. तो बोले अरे तेरे डैडी की वजह से मेरा भी इंस्टा बंद करवा दिया मम्मी ने. तो yeah, coming, there are other people who are like 7, 8, and that kid friend of hers is already on Instagram. Those questions also came up. I don't know how or what I answered. So my question is, हर चीज बताई जाए और अपने अंदर लाई जाए तो संत तो हम भी नहीं है ना. मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या मतलब मिड पाथ कुछ बोलो भाई, कुछ ले दे के दफा करते हैं बॉम्बे के लैंग्वेज में. तो क्या हो सकता है वो चीज. आई वुड वांट टू रियली नो, बिकॉज इवन आई हैवंट हैड ब्लैक एंड व्हाइट ही रहता है अनफॉर्चुनेटली मोस्ट टाइम. बट एज अ पेरेंट यू हैव इनफ गिल्ट इन दिस लाइफ. मतलब एवरी डे यू फील नॉट इनफ, टाइम नहीं दे रहे, उसने ये बोला कि मैं आ रही हूँ. तो मैं तो कई बार खुद इंस्टा पे बैठा रहता हूँ, मैं बोला जा मैं अब देख रहा हूँ ये. तो देन आई फील गिल्टी फॉर आवर्स लेटर कि यार ये नहीं करना चाहिए था. बट यू आर सो कॉट अप इनटू व्हाटएवर यू आर डूइंग. वी आर आल्सो पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड गेट स्टक. ऐसा थोड़ा मांडवली वाला. दो तीन चीजें हैं इसमें. सबसे पहले तो जैसे रजिता ने वल्नरेबिलिटी के बारे में बोला, the thing that helped me the most is being vulnerable in front of my children. बराबर. I had anger issues. I still have. I really get angry. Then second thing is punctuality. मैं एकदम अच्छे काम कूल सब कुछ अच्छे से कर रहे हूँ, सडनली आई गेट टू दिस पॉइंट कि अच्छा मुझे बाहर जाने के लिए देर हो रही है, आई हैव कमिटेड अ टाइम एंड आई एम लेट, तो एवरीथिंग गोज मेरा फ्यूज उड़ जाता है. फिर मैं देखती नहीं हूँ सामने कौन है क्या है. आई रिप्रिमाइंड किड्स, सब कुछ करती हूँ. एंड सब कुछ हो जाने के बाद में at the end of the day then I openly tell them कि अच्छा मैं बहुत ही पागल के तरह behave कर रही थी ना, maybe I should not have done that. And then we also discuss कि ये मेरे इसमें कीड़ा कहाँ से आया है. Maybe it's the way I have been brought up. मेरी दादी ऐसे बोलती थी कि 1 मिनट भी किसी को रुकाना नहीं चाहिए, एंड कहीं पे जाना है तो पहले 10 मिनट वहां पे जाके आप सेटल हो जाओ. यू आर इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड टू रिसीव अदर. और ये सब इतना मन में बैठ गया है कि इसके वजह से मैं ऐसे हूँ. एंड देन आई ऑल्सो एक्सप्रेस माई फियर कि मैं भी तुम्हें एग्जैक्टली वैसे ही बड़ा कर रही हूँ, तो मे बी आफ्टर 40 years आप भी ऐसे ही बन जाओगे. आई एम नॉट रीचिंग टू वन प्लेस. So I don't know, I'm inculcating something as a value, but if I'm really doing it good to them or not, I don't know. So we openly discuss all these things. My kids have started taking me, they have become pro. कि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो my younger one will go inside, get into the kitchen and get me a glass of water, and she would say अम्मा अभी तुम कुछ मत बोलो, just drink this water. ये हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं. I also understand that I'm losing at one point, but that's how it is. The second thing that has helped me is जैसे हम लोग सेंटर में डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, घर कोई और नहीं है. लाइक एक जगह पे आप एक हो, दूसरे जगह पे दूसरे हो, ऐसे नहीं है. तो अगर मैं और 4 साल का बच्चा सेंटर में वी हैव इक्वल वोट, तो एट होम ऑल्सो मी, माई चिल्ड्रन, माई मदर इन लॉ, एवरीवन हैज इक्वल वोट. So there would be a lot of things that my mother-in-law is not happy with me, my children are not happy with me. So what we try to do is have a weekly meeting and open these things up. कि
मेरी कौन सी बात उनको अच्छी नहीं लगी, उनकी कौन सी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बच्चे तो खैर जल्दी जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं, सो दे रियली स्टार्टेड ओपनिंग अप। आई हैड अ बिग टाइम टू कन्वे माय फीलिंग्स टू माय मदर इन लॉ, क्योंकि वही बैगेज है कि अरे बड़ों को ऐसे कैसे बात करेंगे। बट थैंकफुली माय मदर इन लॉ इज वेरी वेरी ओपन एंड एक्सेप्टिंग, और वो एक कल्चर बन जाता है। यू नो, इनिशियली यू हैव टू ट्राई हार्डर, बट वो कल्चर बन जाता है। तो कल की ही बात है, मैंने ऐसे बोला कि आप ये मुझे मत बोलो कि ऐसे करो या नहीं करो, क्योंकि आपने एक बार बोल दिया तो उसके अगेंस्ट जाना भी मुझे नहीं होता, और मैं अगेंस्ट अगर जा नहीं सकती हूँ तो मुझे अंदर अंदर से बहुत गुस्सा आता है। तो आपका रीजन क्या है वो बताओ, फिर मैं डिसाइड करती हूँ ये करना है कि नहीं करना है मुझे। So I also am finding that courage, maybe at the age of 40, which my children are finding right now. And they would be really fearless to express it even to the outsider. They would understand the language in which they have to speak and communicate. And maybe that's happening for good, is what I want to say. तो प्रॉब्लम सबको है, बच्चों को भी ये पता है कि अपने अडल्ट्स को, अपने पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, कुछ तो उनका लूप होल, यानी कि पता है ना, स्क्रू ढीला होता ही है सबका। एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट दे आर लर्निंग, कि सबके साथ कुछ ना कुछ तो वीक पॉइंट्स होंगे। इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू एडमिट इट and how you are trying to overcome. And as we are all speaking about how openly how you are able to express your vulnerability, I guess that carries the biggest learning. Yeah, this is अच्छी पतली गली आपने दी, और मुझे अच्छा लग रहा है ये सब सुन के कि मैं कुछ कुछ इसमें से करता हूँ, और काफी या तो इंस्टिंक्टिवली या तो पढ़ के या तो इनफैक्ट one standing joke that she has, she says all adults are idiots, they make such a big deal out of everything. So she keeps saying this a lot to me, and we both have a laugh over this. And when I see other people acting very adult and very kiddish at the same time, मतलब तुम्हारी उम्र बढ़ गई है, अब क्यों इतना मतलब लग रहा है, chill करो थोड़ा, सच में रहने दो। तो फिर then I share it with her. We really have a good laugh. Or sometimes I find these again, Insta is a big thing in our lives. तो हमारी communication भी कभी-कभी what she sees or what I see. तो उसमें भी when parents are acting like this, or yesterday there was something कि how my mom operates mobile phones. तो किसी ने बहुत बढ़िया बनाया था कि बहुत सारे ऐप खुले हैं तो सेम में से टक 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 बहुत सारे खुले हैं। तो I sent it to her. She said, "Yeah, this is so exactly how Dadi's phone is." We are all seeing it. उसमें 25 खुले हैं, फिर ये जरा स्लो चल रहा है या कुछ हो रहा है, तो जो चीजें हम भी करते हैं। So there are common grounds that I also try and find in befriending them, and I think the joy of having teachers two times in a row for me on the podcast is there is so much lightheartedness in discussion. I was trying to write something for my teachers on Facebook or whatever. In school, I remember some of them I loved because they were nice teachers or whatever. But कुछ मुझे ऐसा याद नहीं आता है कि kindness और ये as a lesson ही बोला जाए. We were far too strict into the system, and obviously था, and some were favorites, and because they taught me, because I became an English writer, so English teachers were favorites, and history was a good subject that I loved. So history was something that I liked. But ये चीजें जो vibe आ रहा है, and this is not even to put the mainstream teachers down. My own wife was like a teacher in a school, and a lot of her friends were friends for a long time. अभी touch में नहीं है, but whenever I think teachers talk of kids, there is a sense of ownership, and there is a sense of like beauty in that. They are really parents in a different form. While they may be going through their own strict systems के अभी वो mainstream में है, तो ये पढ़ाना ही है, ये खत्म ही करना है. COVID में तो they were actually firing everyone, including the parents were fearful. मेरा बच्चा नहीं बैठेगा, बेचारा सो जाता कैमरा पर, कैमरा के सामने सोना है. तो ये हो रहा था. I want to end on this note because again, what a
what a beautiful piece of serendipity this is, that today is Guru Purnima, and I've had two wonderful teachers with me, like you, honestly talking about the fears and doubts and vulnerabilities, because the other series which I run with individuals is actually called The Vulnerable Me, where we discuss such things. And this one is called Dearly Yours. And I've stopped putting that demarcation of we have to find combined values. Obviously, that seems to come out. Thank you for your time, and it's been really a joy talking to both of you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much for inviting us. और बहुत बढ़िया रहा. ऐसे होता भी नहीं है कि sometimes parents also ask us and we have to have like all answers correct because they are counting on you, right? But आपसे बात करके तो ऐसा नहीं लगा. You can be completely free. Yes. So thank you for having us. Thank you, Purva. Thank you, Rajita. Thank you. Thanks. Bye. Bye.